ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता आत्ग्रह। આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવ માંગલિક કરીને समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है. उसमें मुख्य रूप से नई का दो स्वरूप बताया, शुद्ध नई और व्यवहार नई. उसमें व्यवहार नई की बात चलती है. गाथा 9-10 में शिष्य ने प्रश्न किया है कि व्यवहार नहीं परमार्थ का प्रतिपादक कैसे हैं. तो 9-10 गाथा की गाथार्थ परम आए हैं. गाथार्थ में जो बात बताई उसकी प्रथम पूर्व भूमिका प्रथम हम दिखाएंगे कि आत्मा में अनंत सामान्य गुण है, अनंत विशेष गुण है, अनंत असाधारण गुण है. आत्मा के अनंत असाधारण गुण में एक ज्ञान नाम का गुण है. गुण को परिणाम होता है. तो ज्ञान गुण को परिणाम होता है. ज्ञान गुण का जो परिणाम है उसका दो भेद करो तो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान. मिथ्या ज्ञान का भेद करो तो मिथ्या मति ज्ञान
मिथ्या श्रुत ज्ञान, मिथ्या अवधि ज्ञान। सम्यक ज्ञान का भेद करो तो सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मनपर्य ज्ञान, सम्यक केवल ज्ञान। यहाँ जो 9-10 गाथा का विषय है उसमें सम्यक ज्ञान की बात लेनी है। सम्यक ज्ञान का 5 प्रकार: सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुत ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मनपर्य ज्ञान, सम्यक केवल ज्ञान। उसमें से सम्यक श्रुत ज्ञान की बात लेनी है। सम्यक श्रुत ज्ञान 2 प्रकार का है। एक निश्चय श्रुत ज्ञान, दूसरा व्यवहार श्रुत ज्ञान। निश्चय श्रुत ज्ञान आत्मा की अनुभूति के काल में उत्पन्न होता है। उसको निश्चय श्रुत ज्ञान कहते हैं। निश्चय श्रुत ज्ञान आत्मा का अनुभव गोचर ज्ञान है। स्वानुभव गम्य ज्ञान है। निर्विकल्प ज्ञान है। स्व पर का भेद ज्ञान करने वाला ज्ञान है। स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान करने वाला ज्ञान है। विवेकी ज्ञान है। स्व पर का विवेक करके स्व को ग्रहण करना, पर का त्याग करना। स्व पर प्रकाशक ज्ञान है। स्व का जैसा स्वरूप है और पर का जैसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप जानना, उसको स्वपर प्रकाशक ज्ञान कहने में आता है। जो स्वपर प्रकाशक ज्ञान श्रुत ज्ञान है, वो ज्ञान आत्मा के अनुभव के काल में आत्मा के स्वरूप को, यानी आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय उसका जैसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप अनुभवन करना, निर्विकल्प दशा में उसको जानना, ऐसे ज्ञान को भावश्रुत ज्ञान कहने में आता है। भावश्रुत ज्ञान सिर्फ एक शुद्धात्मा की सन्मुख होकर शुद्धात्मा को जान लेता है। ऐसे जो ज्ञान है
उसको ऋषियों ने, मुनियों ने, गणधरों ने श्रुत केवड़ी कहा है। ऐसे ज्ञान को भावश्रुत ज्ञान कहा, और भावश्रुत ज्ञान जिसको प्रकट हुआ, ऐसे जीव को श्रुत केवड़ी कहा। यहाँ तक की बात हम फिर से गुजराती में कहते हैं। आत्मा अनंत गुणात्मक है। आत्माમાં सामान्य गुण अनंत है, विशेष गुण अनंत है, असाधारण गुण अनंत है। आत्माना अनंत असाधारण गुणમાં એક જ્ઞાન નામનો ગુણ છે। જ્ઞાન ગુણ તો ગુણને પણ પરિણામ હોય છે, તો જ્ઞાન ગુણને પણ પોતાના પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે। જ્ઞાન ગુણ બે પ્રકારે પરિણમી શકે। મિથ્યા જ્ઞાન અને સમ્યક જ્ઞાન। મિથ્યા જ્ઞાન અજ્ઞાનીને હોય છે। મિથ્યા જ્ઞાન ત્રણ પ્રકારના છે: મિથ્યા મતિ જ્ઞાન, મિથ્યા શ્રુત જ્ઞાન, મિથ્યા અવધિ જ્ઞાન। એ ત્રણ જ્ઞાનનો અહીંયા વિષય નથી, માટે એની ચર્ચા કરતા નથી। સમ્યક જ્ઞાન પાંચ પ્રકારના છે: મતિ જ્ઞાન, સમ્યક મતિ જ્ઞાન, સમ્યક શ્રુત જ્ઞાન, સમ્યક અવધિ જ્ઞાન, સમ્યક મનપર્ય જ્ઞાન અને સમ્યક કેવલ જ્ઞાન। આટલા જ્ઞાનમાંથી એટલે કે આ પાંચ જ્ઞાનમાંથી અહીંયા સમ્યક શ્રુત જ્ઞાનની વાત કરવી છે। શ્રુત જ્ઞાન એના બે પ્રકાર: નિશ્ચય શ્રુત જ્ઞાન, વ્યવહાર શ્રુત જ્ઞાન। અથવા શ્રુત જ્ઞાનના બે પ્રકાર: ભાવશ્રુત જ્ઞાન અને દ્રવ્યશ્રુત જ્ઞાન। જે જીવ ભાવશ્રુત જ્ઞાન ને ધરનારો છે, એટલે કે ભાવશ્રુત જ્ઞાન જેને પ્રગટ થયું છે, એને આ ગાથામાં શ્રુત કેવડી કહેવા છે। હવે નિશ્ચય શ્રુત જ્ઞાન શું છે? તો કે નિશ્ચય શ્રુત જ્ઞાન દ્વારા
નિશ્ચય શ્રુત જ્ઞાન દ્વારા આત્મા અનુભવ ગોચર થાય છે, એટલે કે આત્માનો અનુભવ થાય છે. એટલે કે ભાવશ્રુત જ્ઞાન આત્માનું અનુભવન કરે છે, સ્વાનુભૂતિ કરે છે, અતિન્દ્રિય જ્ઞાનનો આસ્વાદ આવે છે. આવું ભાવશ્રુત જ્ઞાન અથવા નિશ્ચય શ્રુત જ્ઞાન માત્ર કેવળ એક શુદ્ધાત્માની સન્મુખ થતાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. અને જે જીવ કેવળ એક શુદ્ધાત્માની સન્મુખ થયો અને ભાવશ્રુત જ્ઞાન પ્રગટ થયું, એને આચાર્ય ભગવાન શ્રુત કેવડી કહે છે. એમને ઋષિશ્વરો શ્રુત કેવડી કહે છે. એ શ્રુત કેવડીને નિશ્ચય શ્રુત કેવડી પણ કહી શકાય. તો નિશ્ચય શ્રુત જ્ઞાન તો માત્ર ને માત્ર કેવળ એક શુદ્ધાત્માને જાણનારું જ્ઞાન છે. આવા જ્ઞાની સવિકલ દશામાં 6 દ્રવ્યના સ્વરૂપને પણ જાણે છે. અથવા આવા જ્ઞાની આગમના અભ્યાસ દ્વારા 6 દ્રવ્યના સ્વરૂપને પણ જાણે છે. તે વ્યવહાર શ્રુત કેવડી છે. પણ વ્યવહાર શ્રુત કેવડી કોણ હોય? તો કે જે નિશ્ચય શ્રુત કેવડી હોય એ જ વ્યવહાર શ્રુત કેવડી હોઈ શકે. વ્યવહાર શ્રુત કેવડી કોને કહેવાય? તો કે જે જીવ એટલે જે જ્ઞાની સર્વશ્રુત જ્ઞાનને જાણે. સર્વશ્રુત જ્ઞાન એટલે ષટ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયને જાણે. તેને જીનેન્દ્ર દેવે શ્રુત કેવડી કહ્યા. ગણધર છે 12 અંગ 14 પૂર્વની રચના કરે તો એમાં 6 દ્રવ્યનું સ્વરૂપ, 7 તત્વનું સ્વરૂપ, સાચા દેવગુરુ શાસ્ત્રનું સ્વરૂપ, તો ગણધરો પણ જાણે છે એ સ્વરૂપને. એની પરંપરામાં થયેલા આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ, શ્રાવક શ્રાવિકાને સમ્યક દ્રષ્ટિઓ પણ ષટ દ્રવ્યના સ્વરૂપને સવિકલ દશામાં ન્યાયયુક્તિપૂર્વક યથાર્થપણે જાણે છે. હવે 6 દ્રવ્યને જાણ્યા
એ જાણન ક્રિયા 6 દ્રવ્યની છે કે જાણન ક્રિયા તો આત્માની છે? ફરીવાર, અરીસામાં સિમંદર ભગવાનનું પ્રતિબિંબ પડ્યું તો અરીસામાં પડેલું પ્રતિબિંબ એ સિમંદર ભગવાન છે કે પડેલું પ્રતિબિંબ એ અરીસાની પર્યાય છે? તો કે અરીસાની પર્યાય છે. એમ શ્રુત કેવડીએ 6 દ્રવ્યને જાણ્યા તો જાણનરૂપ ક્રિયા થઈ એ 6 દ્રવ્યની ક્રિયા છે કે એ તો આત્માના જ્ઞાન ગુણની આત્મામાં થયેલી ક્રિયા છે? તો કે એ ક્રિયા તો આત્માની ક્રિયા છે, આત્માના જ્ઞાન ગુણની ક્રિયા છે, આત્માની સત્તામાં થયેલી ક્રિયા છે. એ જાણન ક્રિયા 6 દ્રવ્યોમાંથી આવી કે જાણન ક્રિયા જ્ઞાયક સ્વભાવમાંથી આવી? તો કે જાણન ક્રિયા જ્ઞાયક સ્વભાવમાંથી આવી. જાણન ક્રિયા એ પર્યાય છે કે નથી? તો કે પર્યાય છે. પર્યાય છે તે ભેદ છે કે નથી? તો કે ભેદ છે. એ ભેદ, જ્ઞાનરૂપ ક્રિયાનો ભેદ એ જ્ઞાયક સાથે અભેદ છે કે નથી? તો કે જ્ઞાયક સાથે અભેદ છે. એ જ્ઞાનની ક્રિયા જ્ઞાયકમાંથી આવી છે તો જ્ઞાનની ક્રિયા જ્યાંથી આવી ત્યાં દ્રષ્ટિ કરીએ તો જ્ઞાયક જોવા મળે કે ન મળે? તો કે જોવા મળે. તો જ્ઞાનની ક્રિયા ભેદ છે. ભેદ છે તે વ્યવહાર છે. એ ભેદ અભેદનો ભેદ છે. એ પરિણામ આત્મ સ્વભાવમાંથી આવ્યા છે. માટે એ ભેદ જ્ઞાયક સ્વભાવ તરફ લઈ જતો હોવાથી ભેદ છે એ વ્યવહારનો વિષય છે. જ્ઞાયક પરમાર્થ છે. તો વ્યવહાર નહીં જ્ઞાયકને બતાવે છે એટલે કે વ્યવહાર નહીં પરમાર્થનો પ્રતિપાદક છે. આવું અહીંયા સિદ્ધ કરવું છે. जो पिछली बात बताई हमने वो फिर से हिंदी में भावश्रुत ज्ञान किसको कहा? तो कि जो ज्ञान आत्म स्वभाव की सन्मुख हुआ उसने केवल एक शुद्धात्मा को जाना और उसका अनुभवन किया. उसको भावश्रुत ज्ञान कहा.
ऐसे ज्ञानी पूरे विश्व को जानते हैं। लोक को प्रगट जानने वाले हैं, यानी 6 द्रव्यों को जानने वाले हैं। जो 6 द्रव्यों को जाना ज्ञानी ने, तो जानन क्रिया जो उत्पन्न हुई, वो जानन क्रिया आत्मा की है कि ज्ञेयों की है? वो जानन क्रिया ज्ञायक स्वभाव में से आई है कि ज्ञेयों में से आई है? तो कि ये जानन क्रिया ज्ञायक की है, ज्ञेयों की नहीं है। ये जानन क्रिया ज्ञायक स्वभाव में से आई है, ज्ञेयों में से नहीं आई। ये जो जानन क्रिया, उसमें क्या जानने में आया? तो कि विश्व के पदार्थ। तो ज्ञान की पर्याय ने क्या जाना, उस पर दृष्टि करेगा तो तू ज्ञेय की ओर चला जाएगा। लेकिन जानन क्रिया आई कहाँ से? तो ज्ञायक स्वभाव में से आई है। वहां दृष्टि करेगा तो ज्ञायक पर दृष्टि चली जाएगी, आत्मा का अनुभव हो जाएगा। तो जानन क्रिया है तो पर्याय, तो पर्याय तो भेद है। भेद तो व्यवहारिक का विषय है। लेकिन वो भेद ज्ञायक के साथ अभेद है। वो जानन क्रिया अभेद का भेद है। जानन क्रिया अभेद का भेद है, तो भेद अभेद को दर्शाने वाला है। भेद व्यवहार नहीं है, अभेद परमार्थ है। तो व्यवहार नहीं, अभेद यानी परमार्थ का प्रतिपादक है। वो भेद अभेद तक ले गया। अभेद ज्ञायक दृष्टि में आया, उसी समय तुझे भाव श्रुत ज्ञान प्रकट हो गया, क्योंकि तेरी दृष्टि और उपयोग सिर्फ एक शुद्ध आत्मा के सन्मुख हुआ है। समझ में आता है? कल कहा था ना कि फिर से लेना। तो श्रुत केवड़ी, उसका अर्थ है जी
ओके। श्रुत केवड़ी का अर्थ है भावश्रुत ज्ञान के धरने वाला ज्ञानी। जो निश्चय श्रुत ज्ञान के द्वारा, देखो गाथार्थ, जो जीव निश्चय से श्रुत ज्ञान द्वारा, या श्रुत ज्ञान का अर्थ है भावश्रुत ज्ञान, भावश्रुत ज्ञान द्वारा ये अनुभव गोचर, अनुभव गोचर का अर्थ है जो अनुभव में आ सकता है, अनुभव में आववा योग्य, उसको अनुभव गोचर कहते हैं। अनुभव में आने योग्य, अनुभव गोचर। केवल एक शुद्ध, केवल का अर्थ है सिर्फ, सिर्फ एक शुद्ध आत्मा को सन्मुख होकर जानता है। उसको लोक को प्रगट जाने वाले ऋषिश्वरों श्रुत केवली कहते हैं। तो श्रुत केवली किसको कहा कि भावश्रुत ज्ञान के द्वारा अनुभव के योग्य केवल एक शुद्ध आत्मा की सन्मुख होकर आत्मा को जानता है। उसको ऋषिश्वरों ने श्रुत केवली कहा। तो भावश्रुत ज्ञानी को श्रुत केवली कहा। आगे बताया, जो जीव सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है, सर्वश्रुत ज्ञान का यहाँ अर्थ है षट द्रव्य, उसके गुण, उसकी पर्याय, यानी सर्वज्ञेय। तो सर्वज्ञेय, जो जीव सर्वज्ञेय को श्रुत ज्ञान द्वारा जानता है, उसको भी जिनदेव श्रुत केवड़ी कहते हैं। आत्म स्वभाव को जानना वो भी श्रुत केवड़ी, लेकिन वो भाव श्रुत केवड़ी, या तो निश्चय श्रुत केवड़ी। सर्वश्रुत ज्ञान को जानने वाला वो व्यवहार श्रुत केवड़ी। क्योंकि उसमें
ज्ञेयों की सापेक्षता आई तो व्यवहार कहा। अब ध्यान से सुनना, लास्ट वाक्य। क्योंकि ज्ञान सब आत्मा ही है, इसलिए वो जीव श्रुत केवड़ी है। इसका अर्थ क्या करना? क्योंकि ज्ञान सब छह द्रव्य का जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान की पर्याय आत्मा की पर्याय है। वो ज्ञेय की पर्याय नहीं है। ज्ञान की पर्याय ने षट द्रव्य को उसके द्रव्य गुण पर्याय से जान लिया। वो जानन क्रिया जो हुई आत्मा की सत्ता में से हुई, जानन क्रिया आई आत्मा के स्वभाव में से, ज्ञायक में से। इसलिए सर्वज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान वह भी आत्मा ही है। इसलिए वो जीव श्रुत केवली है। ये श्रुत केवली का अर्थ हुआ व्यवहार श्रुत केवली है। लेकिन ज्ञायक सन्मुख होकर जो जाना वो निश्चय श्रुत केवली। फिर से गुजराती में गाथार्थ छेल्ली 3 लाइन। जे जीव સર્વશ્રુત જ્ઞાનને જાણે છે, સર્વ કહેતા વિશ્વના બધા જ્ઞેયો, સર્વ કહેતા વિશ્વના 6 દ્રવ્યો, એના ગુણો અને એની પર્યાયો, એ સર્વને જાણનારું જ્ઞાન તેને જીનદેવો, તીર્થંકરો શ્રુત કેવડી કહે છે. એમને શ્રુત કેવડી કેમ કહ્યા? કારણ કે જ્ઞાન બધું એટલે જ્ઞાન છ દ્રવ્યને જાણનારું. 6 દ્રવ્યને જાણનારું જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનની પર્યાય આત્માની છે કે જ્ઞેયોની છે? એ જ્ઞાનની પર્યાય આત્મામાંથી આવી છે કે જ્ઞેયોમાંથી આવી છે? એ જ્ઞાનની પર્યાય આત્માની સત્તામાં ઉત્પન્ન થઈ છે કે જ્ઞેયોની સત્તામાં ઉત્પન્ન થઈ છે? તો
કે એ જ્ઞાનની પર્યાય એનો કર્તા આત્મા છે, એ જ્ઞાનની પર્યાય જ્ઞાયકમાંથી આવી છે, એ જ્ઞાનની પર્યાય આત્માના સ્વક્ષેત્રમાં ઉત્પન્ન થઈ છે. માટે સટ દ્રવ્યનું જ્ઞાન કરનારી જ્ઞાનની પર્યાય એ આત્મા જ છે. તેથી તે જીવશ્રુત કેવડી છે. સર્વ પદાર્થને જાણનારું જ્ઞાન એને શ્રુત કેવડી કયા. પણ સર્વ પદાર્થને જાણનારું જ્ઞાન એને જે શ્રુત કેવડી કયા એ વ્યવહાર શ્રુત કેવડી કીધા. વ્યવહાર શું કામ કીધો કે એમાં જ્ઞેયોની અપેક્ષા છે. જ્યારે નિશ્ચય શ્રુત કેવડીમાં તો શ્રુત જ્ઞાન દ્વારા અનુભવમાં આવી શકે એવો કેવળ એક શુદ્ધ આત્માની સન્મુખ થઈ આત્માના સ્વરૂપને જાણે છે, તેને ઋષિશ્વરોએ શ્રુત કેવડી કહ્યા, પણ એ નિશ્ચય શ્રુત કેવડી. હાજી. बारंग 14 पूर्व में, हाँ, तो 12 14 पूर्व केवली भगवान को प्रत्यक्ष है. लेकिन गणधर को प्रत्यक्ष नहीं है. अरूपीय से धर्म अधर्म आकाश काल न्याय युक्ति से उसका श्रद्धान दृढ़ है. लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल रूपी द्रव्य जानने में कब आएगा? केवल ज्ञान प्रकट होगा तब. कालाणु एक प्रदेशी, परमाणु एक प्रदेशी, वो जानने में कब आएगा? केवल ज्ञान होगा तब. तो अब जो गणधर गणधर सट द्रव्य को जानते हैं, एक तो तीर्थंकर भगवान की वाणी से जानते हैं, परंपरा में गणधर ने रचा 12 14 पूर्व, तो उसके माध्यम से परंपरा के आचार्य उपाध्याय साधु उसको जानते हैं. उसकी परंपरा के श्रावक श्राविका जी का सम्यक दृष्टि जानते हैं. अब दूसरी बात कि श्रुत ज्ञान का 2 प्रकार हमने बताया था, भावश्रुत ज्ञान और द्रव्यश्रुत ज्ञान. तो भावश्रुत ज्ञान तो आत्मा का अनुभव है. भावश्रुत ज्ञान और निश्चय श्रुत ज्ञान, उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है.
यहाँ श्रुत ज्ञान की जो पर्याय है उसको व्यवहार कहा। क्यों व्यवहार कहा? तो कि यहाँ सिद्ध करना है व्यवहार नहीं परमार्थ का प्रतिपादक है, ये सिद्ध करना है। तो व्यवहारिक का विषय गुण भेद और पर्याय भेद है। तो यहाँ पर्याय भेद वाला भेद लिया। तो श्रुत ज्ञान की पर्याय तो आत्मा की है, चाहे निश्चय श्रुत पर्याय हो कि व्यवहार श्रुत पर्याय हो, पर्याय तो आत्मा की है। वो पर्याय तो भेद है तो व्यवहारिक का विषय है। लेकिन व्यवहार ने का विषय किसको कहा कि जो भेद अभेद तक ले जाए। तो प्रथम किसी अज्ञानी जन को आत्मा की बात समझानी है तो आपको कहना पड़ेगा कि देखो ये टेबल है, उसको जला दो, दुख होता है? तो कि नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीव नहीं है। लेकिन आपकी अंगुली अग्नि पर रखो, दुख होता है? तो क्या होता है? तो कि यहाँ जीव है। बाद में कहा दुख शरीर में होता है कि जीव में? तो अज्ञानी तो बोल सकता है कि शरीर में। कभी सुनी न हो बात तो दुख शरीर को होता है, ऐसा आंसर दे सकता है। तो उसको कहा कि देखो मरने के बाद